सबसे पहले मैं अपनी जर्नी के बारे में बताती हूँ। मैं नासिक से बिलॉन्ग करती हूँ, व्हिच इज़ इन महाराष्ट्र एंड दिस वाज़ माय थर्ड अटेम्प्ट इन यूपीएससी। तो जो मेरे फर्स्ट 2 अटेम्प्ट्स थे, उनमें मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ था एंड दिस वाज़ माय फर्स्ट मेंस एंड फर्स्ट इंटरव्यू जिसमें मुझे 161 रैंक आई है। तो मेरी जो स्कूलिंग है ये इंग्लिश मीडियम में हुई है फ्रॉम रायन इंटरनेशनल स्कूल नासिक। उसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन सिविल इंजीनियरिंग में किया है फ्रॉम वीर माता जीजाबाई टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट मुंबई एंड I graduated in 2021 and thereafter I started my UPSC prep. So I'll start with prelims first. तो पहले हम बुक लिस्ट की बात करते हैं। तो बुक लिस्ट में जो अपना स्टैंडर्ड है, जैसे फॉर पॉलिटी वी हैव लक्ष्मीकांत। तो अपार्ट फ्रॉम लक्ष्मीकांत व्हाट वी नीड टू डू इज उसको सप्लीमेंट करना है विद द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज इफ यू सी द ट्रेंड ऑफ क्वेश्चंस बीइंग आस्क्ड बाय यूपीएससी, तो काफी बार डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन के जो वर्डिंग्स है वही यूपीएससी पूछ लेता है, या ये पूछ लेता है कि एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन दिस इज गिवन। तो जब आप लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हो तो यू शुड सप्लीमेंट इट विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सो दैट you'll be able to better answer the questions. फिर second is economy. So for economy, I refer to Mrunal sir's economy lectures and his notes. So the notes I purchased from Amazon. So there are two booklets which we get from Amazon. So I extensively use the first booklet, which is useful for prelims. For mains, I prepared my own notes for economy. Then for history, I refer to Pratik Nayak sir's videos for ancient and medieval and his notes. For modern, we all know that the source is Spectrum. And since less questions are being asked, so you can just even read the summary of Spectrum and then refer to the previous year questions and see what is the trend and what kind of questions could be asked. Then we have for geography, I had my class notes. I was a part of the foundation program in Vajiram and Ravi in 2021. So those notes I used. And apart from that, I supplemented it with the NCRTs of class 11th and 12th. Even for history, we have to refer the NCRTs from class 6 to 12. But there is a way in which NCRTs need to be referred. Like, suppose if you are starting with the preparation today, so don't just pick NCRT and start. The right approach is read, for example, if you're reading history, then read Spectrum first, get a overview of what modern history is all about, and then you read the NCRT of modern history, because the NCRT is thematic in nature. So you won't understand if you straight away start with NCRTs. So NCRTs can be done after you have done your basic books. Then for environment and science and tech, I did not refer to any static material. I used to read the PT 365 very selectively based on the previous year questions and the themes. Then for prelims, again, there's a question of how to do the current affairs. So for that, what I did was I referred to the current affairs. Now, how to do the PYQ analysis? So, what I did was rather than purchasing any book from the market where subject wise the PYQs are segregated, what you need to do is download the UPSC, the question papers from UPSC's website and attempt that question paper in 2 hours time limit. Like once you are done with the static important subjects like polity, economy, and geography and history, then you start attempting the questions in the 2 hour time frame, and then you see how many questions you are able to do, because some logical elimination also needs to be applied. So it is not that you will have knowledge to answer all the questions. So if you're attempting these questions in the 2 hour time frame, so you'll actually get a practice of how questions are being asked by UPSC, and rather than practicing test series, you'll also get a hang of the actual exam.
So do this for every paper, at least from 2013 onwards, you do this. And then once you're done with attempting the paper, then you should just analyze every question and its options. So when you do this for 4 to 5 years question papers, you will realize that how questions are getting repeated. You yourself will be able to identify the trend, the important themes around which questions are being asked in prelims. And also you'll be able to anticipate what could be the questions that can be asked by UPSC. So this you need to do on your own. Only then you'll be able to understand it. After that, what we have is CSAT, which is very important. So for CSAT, what I did was I referred to the previous year question papers, identified what different themes are there. And one thing which is very important in CSAT is that you need that bare minimum 66, 67 marks. So for that, you need to be a little bit flexible. You cannot have this approach that I am not good at RC, so probably I'll just focus on quant and reasoning because that won't help. So you need to be good in all the three sections of CSAT, that is the quants, reasoning, and the comprehension. And once you get the CSAT question paper, then you should go through the paper in the first 5-10 minutes and you will realize which section is tougher this time. And based on that, in the first 45 minutes, you need to identify 20 to 25 easy questions. Total 80 questions are there. Identify those easy questions and attempt them in those 45 minutes or 1 hour. Now, next 1 hour you have, in that 1 hour, you have to identify other questions. If you're good in quants and reasoning, then it is good because the accuracy will be good there. So you'll be able to score with certainty in that part. But what is important for CSAT is to practice because we all know the concepts, but practicing in the exam like environment is important. Consistent practice is required, and apart from that, be good in all the three sections. And based on the paper, then you can be flexible in which section you have to attempt more number of questions. So this will be the attempting strategy. For preparation, what I did was because I have my maths optional also. So I practiced around various themes on my own. And in the last 1 month before prelims, I enrolled in the Shunya IS Rapid Revision course for CSAT. So where they give you 4 booklets and a lot of questions are there around the PYQ themes. So that helped me to practice in that last 1 month. So this is what you can do. Then coming to mains now. For mains, three things are very important. First is first take a printout of the syllabus and keep it in front of you. Go through it every alternate day. Then the PYQs, and based on these two, you have to make your own notes. So, for example, in GS1, we have a topic like regionalism or secularism. So, what you will do is type secularism on Google, you'll get any coaching's material, or if you are already a part of any foundation program, they will give you the notes on those topics. So these are your basic notes. Then you read them, then you go through the PYQs on that topic. Once you do that, you'll realize, okay, this is some additional dimension on which UPSC is asking question. So again, you try to find out answer to that PYQ. Add it in your notes. When you do that, you will realize, okay, this could be an additional dimension which can be asked by UPSC. Again, add it to your notes. So this way, for every topic of syllabus, you can prepare your notes based on the basic notes that we get in the market and then enrich it through PYQs. After that, content enrichment is the next step once your notes are prepared. So for that, there are different ways you can do that. You can refer to topper copies. So from there, maybe you can get some good examples. You can also take help of ChatGPT, or there are many enrichment materials available in the market. So that you can refer to.
And from there, selectively, whatever suits you, you can take content from there. Apart from that, another way to enrich is to is the way you present your answers. So there can be one way in which you're just stating the fact. Another way, a better way, is to represent it through diagrams. Like you can show a bar graph or a line graph. You can draw some linear diagrams. Then the hub and spoke model. So this. Then for every topic, you should have some government schemes, some data, which you can use in your conclusion or in your way forward or some committee. So this will take care of your mains. And within the time which we get between prelims and mains, what we need to do is do the current affairs. So I would suggest that don't invest a lot of time in reading newspaper and then making notes out of newspaper in that time which we get between prelims and mains, because there every minute is very important, and now that we have very less time, like nearly 80-85 days, so we need to use it very judiciously. So for current affairs you can refer to mains 365 again selectively, because when you're preparing notes you must already have taken help of the pyqs. So based on that you yourself will realize that which topics from mains 365 are important. For IR, I completely referred to mains 365. I did not have any other notes for it. But for other subjects, I selectively used it. So you can do the same thing. And whenever you are doing preparation for mains, focus on brainstorming the PYQs or writing them and getting them evaluated, because PYQs are the best source. And based on that, you yourself should try to extrapolate what more questions on this particular theme could be asked by UPSC. This is for the 3GS papers. For ethics, I would suggest that you need to have your own notes on every topic of the syllabus, the definition, then some example from your own life, some example of a bureaucrat or some leader. Then you see the PYQ from that topic. Then you'll get an additional dimension from that topic. Sometimes the questions, previous year questions, which are asked in ethics, for example, the quotes, those could be used as your conclusion or introduction if you are able to remember it. And ethics is one subject which can be improved only with practice. It's not about notes in ethics. It is about how you can use that minimum content in multiple questions and write them. So the more you practice, the more you will realize how much easier it becomes the next time you write tests. So this is one part in ethics. And second is, don't lose the touch of writing ethics. What most students will do is they will start with ethics between the time that they get between prelims and mains. And then 15 days you will give to ethics. And once you're done with that, then you shift to other subject and then you lose touch of ethics. So don't do that, because by the time you're completing all the GS papers, you would have lost your touch with ethics completely. And whatever efforts you put in this initial 15 days, they will not be of any use. So keep writing ethics. At least one or two answers of ethics you should keep writing daily so that you don't lose touch of it. And another way of value addition is through the model answers of the various tests. This you should do for all the GS papers. Then is essay. So for essay, first part is content, second part is writing. So when you're preparing your notes for essay, firstly go through the previous year questions and identify some important themes. For example, women is one theme. Then there are some values around which UPSC is asking questions, like peace, compassion, integrity, then materialism. So these 10, 15 values, which we already prepare notes for in ethics, but you prepare it in a more elaborate manner, like you can create some anecdote out of it. So these themes, their notes, then
you also make some anecdotes from people from different walks of life, like somebody from sports, some women, then politics, from history. So you keep these examples handy. Some fictional anecdotes could also, some fictional stories could also be kept handy. For example, one very famous is Buddha and Angulimal story. So, like this, you can have your own collection of stories, data, examples for various themes. You can also refer to topper copies. So, from there, you can borrow some anecdotes, some good arguments. So, this is the part about content in essay. Next is how do you apply that content? So, first is whenever you see any essay, first part is brainstorming. In brainstorming, you just try to understand how what can you infer? Like once you read the essay, what can you infer from it? Or what is the first thought that you get after you read the essay? Then comes what all anecdotes or examples you can use in this essay. Because when you do brainstorming, it will be very random because thoughts will be very random. So just write it down, whatever is coming to your mind. Then, when you're structuring the essay, you need to create a logical flow. So, the earlier approach of PESTLE is not working in UPSC now. We are not getting marks for that. Because what we need is whenever a topic is given, we don't need examples from different spheres to substantiate the same thing. Like if you're giving example from political, social, and economic part, but you're saying the same thing, just you're using different examples. So that is not adding any value to the essay. So the right approach is to break down the essay into micro dimensions. For each dimension, you can have two or three arguments, and then you substantiate that argument with example. So how to generate these arguments? For that, you need to ask different questions like why is it like this? How is it like this? So coming back to this, that how are we going to generate the argument? So whenever we see the question, तो कुछ questions पूछ लीजिए जैसे कि why is this like this? How is it like this? And जो हम end करते हैं आंसर को ऐसे को, तो वहां पर हमें कुछ वे फॉरवर्ड देना है. जैसे कि बहुत सारे एसेज जो होते हैं उनका वे फॉरवर्ड सिमिलर सा ही होता है जहाँ पे हम इस कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं कि अगर सोशलाइजेशन अच्छा होगा तो मे बी थिंग्स वुड इम्प्रूव, तो उधर वो लिखना है. फिर कुछ फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट्स जो है जो हम एथिक्स में भी पढ़ते हैं जैसे कि निष्काम कर्म है, कुछ जापानीज कॉन्सेप्ट्स होते हैं, तो वो कुछ आप पढ़ लीजिए जैसे कि वो इकिगाई एंड ऑल. कुछ बुक्स के नाम आप यूज कर सकते हैं ऐसे में. तो ऐसे जो है इसको अगर हम एनेक्डोट से स्टार्ट करें तो उसी एनेक्डोट से वी शुड एंड इट ताकि वो कंप्लीट सर्कल बन जाए. एंड कुछ वे फॉरवर्ड दे रहा है एंड bring some extra dimension into it which is not mentioned, so that will add more value. And whenever आप एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ में जा रहे हैं तो इंश्योर करें कि वो फ्लो ब्रेक ना हो. so there are some connecting words जो हम यूज कर सकते हैं जैसे कि however और having said this, तो ऐसे करके हम लिख सकते हैं. कुछ लोगों का अप्रोच होता है कि जैसे ही एनेक्डोट खत्म होता है एनेक्डोट के बाद वो एक्सप्लेन कर देते हैं कि व्हाट इज देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एसे, एंड उसके बाद ही वो लिख देंगे कि सो वी विल एक्सप्लोर द एसे, और फिर वहां कुछ 4-5 क्वेश्चंस लिख देंगे और फिर पूरे एसे में उन क्वेश्चंस को आंसर करेंगे वो. तो आप वैसे कर सकते हो. या यू कैन मेक स्मॉल स्मॉल हेडिंग्स. तो मैं पर्सनली हेडिंग्स नहीं देती थी ऐसे में, मैं पूरा फ्लो में क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में लिखती थी उसको. तो आपको जैसे भी कंफर्टेबल है आप वैसे कर सकते हो. एंड जैसे द टाइम बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस, तो उसमें आई वुड सजेस्ट दैट राइट एटलीस्ट 4 essays so that you have a practice of it, because in the actual exam दोनों essays को इक्वल टाइम देना जरूरी है. अदरवाइज ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ऐसे को बहुत टाइम दे दिया एंड सेकंड ऐसे लिखने के लिए टाइम नहीं बचा. इस साल बहुत स्टूडेंट्स के साथ ऐसे ही हुआ है कि फर्स्ट ऐसे लिखने में 2 घंटे चले गए, तो लास्ट ऐसे सिर्फ 1 घंटे में लिखना पड़ा. तो टाइम मैनेजमेंट बहुत क्रूशियल है. इनिशियल हाफ एन आवर आप दे सकते हो
फॉर ब्रेनस्टॉर्मिंग। आफ्टर दैट जो बाकी का टाइम है वो दोनों ऐसे में इक्वली डिवाइड करके लिखना है बिकॉज बोथ हैव इक्वल मार्क्स। देन वी कम टू ऑप्शनल। तो मेरा ऑप्शनल मैथमेटिक्स था। सो बहुत लोगों को क्वेरी होता है दैट हाउ टू चूज एन ऑप्शनल। तो फर्स्ट इज यू शुड बी इंटरेस्टेड इन दैट ऑप्शनल। अदरवाइज आपको पूरे साल वो पढ़ना है एंड मतलब मिनिमम 2 साल तो आपको पढ़ना ही है। सो इफ यू डोंट हैव एनी इंटरेस्ट इन इट तो वो बहुत बोरिंग हो जाएगा। सेकेंड इज उसके रिसोर्सेज अवेलेबल है कि नहीं मार्केट में। एंड थर्ड इज कि उस ऑप्शनल में मार्क्स कैसे आ रहे हैं, व्हाट आर द एवरेज मार्क्स इन दैट ऑप्शनल। तो ये 3 पैरामीटर्स को ध्यान में रख के यू कैन चूज योर ऑप्शनल। मैं अपने ऑप्शनल का बताती हूँ। जैसे मेरा ऑप्शनल मैथ्स था तो उसके लिए मैंने आईएमएस के नोट्स रेफर किए थे एंड देन मैंने उसको सप्लीमेंट किया विथ टेस्ट सीरीज। तो एक है मैथोक्रेट की टेस्ट सीरीज मैंने ज्वाइन की थी एंड अनदर वन वाज आईएमएस की टेस्ट सीरीज। उसके बाद पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। सो वेन एवर यू आर डूइंग एनी टॉपिक इन मैथ, स्ट्रेट अवे आफ्टर दैट टॉपिक डू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो यू विल गेट एन आइडिया कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। एंड जैसे डिफिकल्टी लेवल हर साल इंक्रीज हो रही है, जैसे 2024 का जो पेपर था उसमें दे चेंज द पैटर्न इन विच क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड। तो जब आप पीवाईक्यूज करेंगे तो आपको इसकी आइडिया लग जाएगी कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, किस कॉम्बिनेशन मतलब चैप्टर्स का कैसा कॉम्बिनेशन है उसको यूपीएससी चेंज कर रहा है। तो वो सोच के नहीं जाना है। सारे चैप्टर्स को इक्वल वेटेज देके ही आप जाओ मैथ्स के केस में। एंड फॉर मैथ्स प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आपको बहुत चीजें पता होंगी बट अगर आप प्रैक्टिस नहीं करके गए तो क्वेश्चन सिलेक्शन में गड़बड़ हो सकती है, आपकी एक्यूरेसी कम आ सकती है बिकॉज मैथ्स बहुत ही स्कोरिंग ऑप्शनल है बट उसको बहुत कंसिस्टेंट प्रैक्टिस चाहिए। एंड बिकॉज मैथ्स का किसी भी और जीएस के साथ ओवरलैप नहीं है तो इट इज एन एडिशनल सब्जेक्ट। तो आप में से जो भी लोग मैथ्स लेने का सोच रहे हैं सो बी प्रिपेयर्ड दैट यू विल हैव टू पुट इन एक्स्ट्रा नंबर ऑफ आवर्स बिकॉज दिस इज एन एडिशनल सब्जेक्ट। उसके बाद कम्स दी पर्सनालिटी टेस्ट। सो आप लोगों ने नोटिस किया होगा दैट यूपीएससी हैज नेम्ड इट पर्सनालिटी टेस्ट एंड नॉट इंटरव्यू। एंड उसका रीजन ये है कि दे वांट टू चेक योर पर्सनालिटी। दे डोंट वांट टू चेक कि अच्छा इसका नॉलेज कितना है, दैट दे हैव ऑलरेडी चेक। सो पर्सनालिटी टेस्ट में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू आर योर सेल्फ। ऐसे ट्यूटर्ड आंसर्स बिल्कुल नहीं देने हैं बिकॉज देन दे विल स्ट्रेट अवे आइडेंटिफाई कि आपको किसी कोचिंग में बताया होगा ऐसा जवाब देने के लिए और आप वही बोल रहे हो। तो बहुत ही नेचुरल कॉन्वर्सेशन होना चाहिए वो। सेकेंड इज इंटेग्रिटी दिखनी चाहिए। मतलब अगर आपने आपके डैफ में कोई चीज मेंशन की है, फॉर एग्जांपल कोई हॉबी मेंशन की है बट एक्चुअल में आप उस हॉबी को प्रैक्टिस नहीं करते हो और उसके ऊपर आपको कोई क्वेश्चन पूछ लिया एकदम ट्रिवियल सा विच यू आर नॉट एबल टू आंसर, तो दे विल आइडेंटिफाई दैट यू हैव रिटन अ फेक हॉबी। तो वहीं पे आपके मार्क्स बहुत कम हो जाएंगे। तो दैट इंटेग्रिटी शुड बी विजिबल कि जो आपने डैफ में लिखा है उसके बारे में आपको एक फेयर अमाउंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो जैसे पर्सनालिटी टेस्ट है तो इसका जो प्रिपरेशन है नॉट नेसेसरी कि आप मेंस के बाद ही करोगे। उसमें जो हॉबी वाला सेक्शन है बिकॉज ये जर्नी इटसेल्फ इतनी बड़ी है दैट यू ऑल्सो नीड सम रिफ्रेशमेंट सम रिजुविनेशन डेली। सो कल्टिवेट सम हॉबी जो आप चाहते हो कि आप एक्चुअल जो डैफ आएगा उसमें भी मेंशन कर सकते हो। तो कोई ऐसी हॉबी आप अभी से कल्टीवेट करना शुरू कर दीजिए ताकि आप डैफ में भी मेंशन कर पाओगे एंड आपका मेंटल हेल्थ भी अच्छा रहेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, फॉर द प्रेपरेशन ऑफ इंटरव्यू व्हाट इज नेसेसरी इज आप कोई भी एक न्यूज़पेपर रेफर करो। पीपल डू सजेस्ट कि यू शुड रीड 2 or 3 न्यूज़पेपर्स फॉर इंटरव्यू बट मैंने एक ही न्यूज़पेपर रीड किया था, इंडियन एक्सप्रेस। And what I did was I used to frame opinion on different topics. तो मेरे फ्रेंड्स के साथ मैं डिस्कस करती थी, हमारा एक पीयर ग्रुप था
एंड इंटरव्यू के लिए आई वुड सजेस्ट कि डू हैव अ पीयर ग्रुप, क्योंकि आप उसमें रोज जब डिस्कशन करोगे तो आपकी वो बोलने की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, एंड यू कैन हैव डिस्कस एंड देन हैव ओपिनियन ऑन डिफरेंट टॉपिक्स। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो आपने डैफ में हर एक चीज लिखी है, आपका कीवर्ड मतलब आपके नाम से लेकर आपकी हॉबीज, आपका कॉलेज, आपकी स्टेट, हर एक चीज आपको प्रिपेयर करनी है। एंड जो इंटरव्यू के ट्रांसक्रिप्ट्स आते हैं टेलीग्राम चैनल्स पर, तो उनको भी आप रेफर करते रहिए, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। एंड जैसे मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है इंटरव्यू में, तो मुझे स्वेन सर का बोर्ड था, एंड आई हैव सिक्योर्ड 201 मार्क्स इन इंटरव्यू। तो मेरा इंटरव्यू हाफ वाज डैफ बेस्ड, हाफ वाज करंट अफेयर्स बेस्ड, क्योंकि उस टाइम पे जो टैरिफ वॉर चल रहा था उसके ऊपर मुझे काफी क्वेश्चंस पूछे गए। सो इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस द बोर्ड इज वेरी कॉर्डियल, वो बिल्कुल आप पे चिल्लाएंगे नहीं, दे विल हैव द स्माइल ऑन देयर फेस, बट वो डिफरेंट तरीके से आपके ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश जरूर करते हैं, अलग अलग डोमेन्स के क्वेश्चन पूछ के, कुछ सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछेंगे। सो यू शुड बी एबल टू हैंडल दैट प्रेशर। मेरे एक्चुअल इंटरव्यू में मुझे 5 क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं आए थे, बट दैट डिडंट लेट मी लूज माई कॉन्फिडेंस। तो यही आपको भी करना है कि भले आपको लगातार 5-6 क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं आए इंटरव्यू में, दैट डजंट मैटर, बिकॉज दिस इज अ पर्सनैलिटी टेस्ट, उनको सिर्फ आपकी पर्सनैलिटी चेक करनी है। अगर आप नर्वस हो गए कि 5-6 क्वेश्चंस नहीं आए, सो इट विल रिफ्लेक्ट ऑन योर फेस, तो वो आपके पर्सनैलिटी का ही पार्ट है फिर, कि आपको कुछ चीजें नहीं आ रही है, यू आर गेटिंग नर्वस, तो इट इज नॉट वेरी वेल टेकन, तो आपके मार्क्स कम हो सकते हैं उसके वजह से। So, if I were to give some timeline, like for those who are doing, who are going to appear for mains this year, what you have very less time. So, keep doing your optional. Minimum 4 FLTs लिख लेना हर GS के, 4 essays मिनिमम लिख लेना, ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज भी लिख लेना, एंड गिव इक्वल टाइम टू एवरी GS। सो 15-15 डेज आप हर GS को दे सकते हो, एंड संडेज को यू कैन राइट essay टेस्ट। अनदर पार्ट इज कि पेपर कंप्लीशन का बहुत बच्चों को इश्यू होता है, सो इट विल इम्प्रूव विथ टाइम। जैसे जब मैंने मेरी फर्स्ट FLT दी थी, सो आई रिक्वायर्ड 30 मिनट्स मोर, लाइक 3 hours 30 minutes में मैंने एक टेस्ट लिखा था। फिर जब सेकेंड FLT दिया, तो 3 hours 20 minutes आई टुक। Then in the third FLT, I took 3 hours 10 minutes. In the fourth FLT, I took 3 hours 5 minutes. तो अगर आपको सिर्फ 10-15 मिनट्स एक्स्ट्रा लग रहे हैं, तो इट इज ओके, आप वो एग्जाम हॉल में कवर कर लोगे, बिकॉज उस टाइम पे वो प्रेशर इतना होता है कि यू विल ऑटोमेटिकली, वो स्पीड आपकी बढ़ जाएगी। एंड ऑल्सो इन द एक्चुअल एग्जाम, वी गेट द क्वेश्चन पेपर 5 minutes बिफोर द टाइम स्टार्ट्स। सो इन दैट 5 minutes यू कैन जस्ट गो थ्रू द क्वेश्चन पेपर, थोड़ा ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हैं पहले 2-3 क्वेश्चंस का, तो वहां आपका टाइम बच जाता है, तो पेपर कंप्लीट हो जाएगा। एंड जैसे मेरी पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी अगर मैं बोलूँ, तो मैं 15 मार्कर से स्टार्ट करती थी। पहले जो इनिशियल 5 मिनट्स है जहाँ पर क्वेश्चन पेपर मिल गया है, तो फटाफट मैं देख लेती थी कि क्या क्वेश्चंस पूछे हैं पेपर में, एंड उधर से पता लग जाएगा कौन से क्वेश्चंस का मुझे कोई आइडिया नहीं है, 2-3 क्वेश्चंस जैसे होते ही है, तो उन क्वेश्चंस को मैं लास्ट के लिए रखती थी। फिर मैं 15 मार्कर से स्टार्ट करूंगी, तो मैं नियरली 10 मिनट्स देती थी 15 मार्कर्स को, एंड 7.5 मिनट्स देती थी 10 मार्कर्स को। तो ऐसे करके पेपर कंप्लीट हो गया था मेरा। Then talking about the timeline for those who are appearing for 2026. So you should be done with your optional. 80 to 85% of your optional should be done by December 2025. फिर आपके जो मेंस के नोट्स है वो भी 80% दे शुड बी डन by December 2025. Then मैं ये सजेस्ट करूंगी कि डोंट स्टार्ट विद GS1, बिकॉज यू विल एनीवे बी रीडिंग GS1 फॉर प्रीलिम्स, बिकॉज हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ने ही वाले हो। तो GS1 का वो पार्ट जो प्रीलिम्स के साथ ओवरलैप करता है, दैट कैन बी डन बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस, बट द सोसाइटी पार्ट विच इज देयर इन GS1,
उसके नोट्स यू प्रिपेयर बिफोर हैंड ओनली, लाइक by December, max to max by January 2026. For essay, you can write essay one or two if you are getting that FOMO before prelims. Otherwise, essay can be done between prelims and mains. And then you can start with your prelims preparation in January or February 2026 and give 2 hours daily to CSAT again when you start prelims preparation, because CSAT is something which requires consistent practice. It is not that you will just give 15 days to CSAT and that 15 days whole day you are doing CSAT. That way you won't, it might not help you. So consistent efforts are required. डेली 2-2 घंटे आप दे सकते हो सीसैट करने के लिए. एंड जो लास्ट 20 days है बिफोर प्रिलिम्स, in that you should just revise your content and revise the previous year questions. कोई भी नया source add मत करना. And for prelims, current affairs is like very overrated thing. आप एक कोई भी कोचिंग की मैगजीन पढ़ सकते हो जस्ट वो फोमो हटाने के लिए, बिकॉज यूपीएससी एनीवे डजंट आस्क फ्रॉम दोज मैगजीन्स, बट वो आपका मन के सेटिस्फैक्शन के लिए यू कैन रेफर टू इधर पीटी 365 और एनी अदर मैगजीन दैट यू आर रेफरिंग टू, एंड दैट विल बी सफिशिएंट. मतलब बहुत ज्यादा करंट अफेयर्स के पीछे नहीं भागना है, बिकॉज दैट इज वेरी अनप्रिडिक्टेबल. उसका जो कॉस्ट बेनिफिट रेशियो है वो बहुत कम है. सो इट इज बेटर कि आप जितना स्टैटिक को रिवाइज कर सके उतना अच्छा है. एंड कोई भी एक टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हो फॉर प्रीलिम्स. मैं पर्सनली मैंने टेस्ट सीरीज इतने ज्वाइन नहीं किए थे. व्हाट आई डिड वाज कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही डाउनलोड करके पेपर को अटेम्प्ट करना, एंड जो ओपन टेस्ट आते हैं मार्केट में हर कोचिंग के लास्ट 2 months में, तो वो एफएलटीज वो दिए थे मैंने. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ यू सी यूपीएससी journey, it is more of a process. So जैसे जैसे आप चीजें करते जाएंगे वैसे वैसे you will self improve, and the key is that you need to read, you need to revise, and most important is practicing. Because जैसे हम आंसर राइटिंग में भी बोलते हैं कि we need diagrams, we need case studies, we need examples, government schemes, सबको पता है ये चीजें. बट जब तक हम वो खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक वो चीजें आएंगी नहीं. सो व्हेन यू राइट योर फर्स्ट टेस्ट, तो शायद आप ये सब चीजें ना कर पाओ पहले टेस्ट में. फिर बैठ के उसको एनालाइज करना है कि अच्छा इस क्वेश्चन में आई कुड हैव रिटन दिस गवर्नमेंट स्कीम, आई कुड हैव रिटन दिस कमिटी, आई कुड हैव मेंशन्ड दिस डेटा, आई कुड हैव ड्रॉन दिस डायग्राम. तो ऐसे आपको हर टेस्ट के बाद वो एनालिसिस करना है फॉर एवरी क्वेश्चन ऑन योर ओन. डोंट रिलाई ऑन कोचिंग कि आप वहां सबमिट कर दोगे फिर वो चेक होके आएगा. वो इतना टाइम नहीं देंगे आपके हर आंसर को, ये आपको बैठ के खुद करना है. तो धीरे धीरे आपको इम्प्रूवमेंट दिखने लग जाएगी आपके ही आंसर्स में. सो नाउ व्हाट वी कैन डू इज टेक सम क्वेश्चंस. So you can ask your questions in the comment section. Somebody had asked about the physics portion of maths. So for that, I referred to Mathocrat YouTube channel and I covered it from there and supplemented it with the previous year questions and the Mathocrat test series and IMS test series also. So if you have any more questions, you can write it in the comment section. So why I decided to do UPSC was because my grandmother, she was a Anganwadi teacher, and so from there the inspiration came that how every person can play a role, and that sense of social responsibility is something which got inculcated in me at a very early age. And growing up, जैसे मेरी schooling रही है, मेरी parenting जो parents ने की है, तो
every time this thing was constant that whatever you do, keep this in mind that you should be able to give back to the society. And during COVID, when I saw that what impact an administrator can have and the kind of role as a catalyst that they can act as, that's when I decided that I want to do UPSC. And right after my graduation, then I started preparing for UPSC. Uh, for me, questions in interview was firstly, it started with my hobby. So I have stray cats, I take care of them. So from there, it started. Then some in general questions were asked opinion based about women and law and order. Then about civil engineering, some structure related questions were asked. Some situation questions were also asked, like if you are the DM and if there is an earthquake, how will you handle it? And other questions were surrounded around the Trump and the tariff war. Then, with respect to the physics portion in maths, I did it selectively based on PYQs. For example, in fluids, if we see, I did only till vortex. We also have Navier-Stokes, but it gets very complicated and we don't have appropriate guidance for those topics. So I did till vortex based on the PYQs. Similarly for mechanics also. So center the physics part around PYQs and that will be sufficient. If something else is asked, then nobody will be able to answer it. For those who are in class 10, I think there is no need to prepare right now. You can prepare during your graduation. Right now, you can focus more on your 10th standard boards and then you can focus more on your personality development because it is in 11th, 12th, and then during our graduation where we are actually a part of multiple fests, we cultivate a lot of hobbies. So that will again add to your personality. इंटरव्यू में सॉरी अगेन उसके कहने के दो तीन तरीके होते हैं तो मैंने ऐसे रखा था कि मैं ऐसे बोलूंगी कि सॉरी सर आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट या सॉरी सर आई विल रीड मोर अबाउट इट और अगर कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया इंटरव्यू में जो आपको आना चाहिए था बट बहुत ही ट्रिवियल क्वेश्चन है बट स्टिल यू आर नॉट एबल टू आंसर तो आप ऐसे बोल सकते हो कि सॉरी सर मैम आई शुड हैव नोन दिस फैक्ट बट आई विल रीड अबाउट इट. Uh, this is always there that we are hesitant to write our first answer क्योंकि हमको लगता है कि we will not be writing that good. So this is the case with everyone. But like we say, right, well begin is half done. So at least you start. जैसा भी लिख रहे हो वैसा लिखो, but you start. एंड वंस यू स्टार्ट राइटिंग आपको खुद रियलाइज होगा अच्छा मैंने तो इसमें कमिटी लिखनी चाहिए थी इसमें तो ये डायग्राम बनना चाहिए था इसमें ये एग्जाम्पल आना चाहिए था तो ऐसे करते करते आपका आंसर दो तीन टेस्ट के बाद बहुत इम्प्रूव हो जाएगा अपने आप ही तो पहला आंसर किसी का भी अच्छा नहीं होता है एंड डोंट बी हेजिटेंट वो इनर्शिया ब्रेक करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा. See, in terms of the number of hours that we study, तो जैसे मेरा ऑप्शनल मैथ्स था, तो मुझे एक्स्ट्रा आवर्स पुट इन करने पड़ते थे. तो ऑन एन एवरेज आई वुड से कि 9 to 10 आवर्स में डेली पढ़ती थी. बट जैसे प्रीलिम्स के टाइम पहले मतलब एक महीना पहले कभी-कभी ऐसा भी होता है कि ऐसे लग रहा है कि रिवीजन पूरी नहीं हुई है या ये टॉपिक छूट रहा है. तो कुछ टाइम ऐसे भी हुए, कुछ डेज़ ऐसे भी है कि 12-13 आवर्स भी पढ़ा है, बट ऐसे नहीं कि कंसिस्टेंटली 12 घंटे पढ़ रहे। ऑन एन एवरेज आप 9 टू 10 आवर्स पढ़ सकते हैं, बिकॉज़ मेरा ऑप्शनल मैथ्स था। अगर आपका कोई और ऑप्शनल है तो आई थिंक 8 टू 9 आवर्स शुड सफाइस। सी व्हेन वी सी द क्वेश्चन,
तो सबसे पहले देख के, जैसे आप अभी स्टार्ट कर रहे हो आंसर राइटिंग, आपने इसके पहले कोई आंसर लिखा नहीं है, तो आपको ऑब्वियसली टाइम लगेगा। 3 घंटे की टेस्ट है, आपको 5 घंटे भी लग सकते हैं, बट लेट इट बी, लगने दो उतना टाइम, बट यू नीड टू एटलीस्ट स्टार्ट। तो वेन एवर यू सी अ क्वेश्चन, पहले आप उधर मार्क कर लो क्वेश्चन में कि इस क्वेश्चन में पार्ट्स कितने हैं। फिर अपने आप मन में ही आपको सोचना है कि इसका मैं इंट्रोडक्शन क्या लिखूंगी, फिर इसमें मैं कौन सा डायग्राम बनाऊंगी, इसका कंक्लूजन क्या लिखूंगी। तो व्हेन यू डू दिस, तो इनिशियली तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा ये करने में, 5 मिनट भी लग सकते हैं सिर्फ क्वेश्चन को देख के उसको ब्रेनस्टॉर्म करने में। बट धीरे धीरे वो जो टाइम है वो 1 मिनट से भी कम हो जाएगा। तो वो 1 मिनट से कम होने तक एफर्ट्स करते रहने हैं। तो मन में वो स्ट्रक्चर बनाना है और फिर लिखना शुरू करना है। दिस वाज माय थर्ड अटेम्प्ट। व्हेन वी सी टॉपर कॉपीज, तो जैसे आप कोई भी टॉपर की कॉपी डाउनलोड कर लेना, एंड वो क्वेश्चन जो है उस टेस्ट में उसको खुद लिखने की कोशिश करना, और फिर कंपेयर करना कि टॉपर ने क्या लिखा है और आपने क्या लिखा है। एंड काफी बार ऐसे भी होगा कि आपका आंसर शायद अच्छा हो उनसे, और उनका आंसर देख के आपको कुछ नया कंटेंट मिल रहा है, कुछ अच्छा एग्जाम्पल, कोई अच्छी केस स्टडी मिल रही है, कुछ अच्छा कंक्लूजन मिल रहा है, तो वो आप आपके इसमें लिख सकते हो। तो इस तरीके से यू कैन एनालाइज। ऐसे में बहुत हेल्प होती है टॉपर कॉपीज की, बिकॉज कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स या एनेक्डोट आप वहां से ले सकते हो। जैसे मल्टी डायमेंशनल आंसर लिखने के डिफरेंट तरीके हैं, जैसे बहुत अलग अलग फ्रेमवर्क्स आते हैं। जैसे एक तो पेस्टल फ्रेमवर्क ही है, जब भी कोई कॉन्सिक्वेंसेस पूछ लिए तो आपने पेस्टल लगा दिया कि इस चीज का पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस क्या, इकोनॉमिक क्या है, सोशल क्या है। तो जब आप पीवाईक्यू एनालिसिस करेंगे तो आपको अपने आप समझ में आएगा कि कैसे हम अलग अलग डायमेंशंस दे सकते हैं। कुछ आंसर्स ऐसे होते हैं जहाँ पे हमें थोड़ा लाइफ साइकिल अप्रोच लिखना होता है, मतलब थोड़ा इवोल्यूशन फॉर्म में, जैसे एंशियंट में क्या था, मेडिवल में क्या हुआ, फिर मॉडर्न में क्या हुआ। तो हर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो मल्टी डायमेंशनल आंसर कैसे लाना है, वो फ्रेमवर्क चेंज होते रहेंगे। तो आप यूट्यूब पे भी बहुत सारे वीडियोस आजकल आते हैं विथ रिस्पेक्ट टू हाउ डिफरेंट फ्रेमवर्क्स कैन बी यूज्ड, तो वो आप कर सकते हो। शिवन सर का आई थिंक वीडियो है विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंट फ्रेमवर्क्स दैट यू कैन यूज टू मेक योर आंसर मल्टी डायमेंशनल, तो आप वो रेफर कर सकते हो। मेरा ग्रेजुएशन सिविल इंजीनियरिंग में हुआ है। The plan B, if you have to choose, so firstly, your graduation can itself be a plan B. Like, I'm a civil engineer, so that itself acted as a plan B for me. Apart from that, you can give CAT for MBA. You can also do MS if you are keen to go abroad. Apart from that, आप coaching में भी enroll कर सकते हो as a teacher if you are fond of teaching. So ये कुछ plan B है. Apart from that, if you are interview appeared candidates, तो उनके लिए UPSC releases the list of the marks of interview appeared candidates, but those who couldn't make it to the final list. तो वो लिस्ट के बेसिस पे यू कैन गेट जॉब इन डिफरेंट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस इटसेल्फ, या different government exams are also there, so that could be another plan B. If I would talk about my mistakes, so in my first two attempts, I did not analyze the previous year questions properly. And then I realized कि क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, हर साल 2-3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रीलिम्स में रिपीट हो जाते हैं, एंड आई वाज नॉट एबल टू आंसर दोस 2-3 क्वेश्चंस आल्सो। सो इन माय थर्ड अटेम्प्ट व्हाट आई डिड वाज, जैसे मैंने पहले भी बताया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है, खुद पेपर अटेम्प्ट करना है, खुद एनालाइज करना है, नॉट रेफरिंग टू एनी बुक विच इज अवेलेबल इन द मार्केट।
तो उससे आपको खुद ही ट्रेंड समझ में आ जाएगा और क्वेश्चन दिमाग में बैठ जाएगा कि ये क्वेश्चन मैंने खुद अटेम्प्ट किया था तो वो याद रह जाता है। वैल्यू एडिशन के लिए व्हाट यू कैन रेफर इज मार्केट में बहुत सब कोचिंग का मटेरियल अवेलेबल है, वो आप कोई भी एक रेफर कर सकते हो और उसको सप्लीमेंट करना है जो भी आप मॉक टेस्ट दोगे उसके मॉडल आंसर्स से एंड अपार्ट फ्रॉम दैट टॉपर कॉपीज से एंड जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उनको भी लिखिए और उनका अगर मॉडल आंसर अवेलेबल नहीं है तो चैट जीपीटी का आप यूज कर सकते हैं, उसको थोड़ा बोलिए अलग अलग फील्ड के एग्जांपल्स केस स्टडीज देने के लिए, तो वैसे आपको कंटेंट एनरिच करने में हेल्प होगी। फॉर रिवीजन व्हाट आई डिड वाज फॉर प्रीलिम्स तो मैं 20-20 डेज का मेरा रहता था कि 20 डेज आई विल डू ज्योग्राफी, 20 डेज आई विल डू इकोनॉमी, 20 डेज एनवायरनमेंट, 20 डेज साइंस एंड टेक एंड हिस्ट्री बिकॉज बहुत वास्ट है हिस्ट्री एंड बहुत डिफिकल्ट है उसको याद रखना। तो मैं ऐसे करती थी कि डेली मैं 2 घंटा हिस्ट्री पढ़ती थी, सो इन 1 मंथ मेरा हिस्ट्री भी कवर हो जाएगा ये बाकी सब्जेक्ट्स के साथ साथ। तो ये एक बार फर्स्ट आइटरेशन कर ली, फिर उसके बाद वापस सेकेंड आइटरेशन ऐसे करेंगे एंड रात को सोने से पहले आई यूज टू रिकॉल जो भी पूरे मैंने दिन में पढ़ा है, नॉट वर्ड बाय वर्ड बट ब्रॉडर टॉपिक्स। एंड फॉर मेंस जैसे आप नोट्स बनाते हो तो फर्स्ट सेट ऑफ नोट्स तो बहुत बल्कि होंगे, फिर उसी को आप रिवाइज करते रहोगे एंड प्रीलिम्स एंड मेंस के बीच में पढ़ते पढ़ते आपको रियलाइज हो जाएगा कि ऑलरेडी एक दो रिविजन्स हो गई है, तो सिर्फ उतने नोट्स बनेंगे जो इम्पोर्टेंट है और जो आप भूल रहे हो, तो वो नोट्स बहुत ज़रूरी है बिकॉज वो जो 2 पेपर है उनके बीच का जो टाइम है वो आप फिर वैसे यूटिलाइज कर पाओगे वो नोट्स पढ़ के। आई वुड सजेस्ट कि जैसे आपने किसी भी एक जीएस पेपर को कवर कर लिया, जैसे आपने जीएस 1 में सोसाइटी पढ़ा है उसके नोट्स बना लिए, तो तुरंत उसकी आंसर राइटिंग कर लो और उसको इवैल्यूएट करवा लो अपने मेंटोर से। मैंने कन्वर्ट आईएएस करके एक प्लेटफॉर्म है, वहां पर मैं आंसर्स अपलोड करती थी तो वहां से इवैल्यूएट होके आते थे बिकॉज मैं दिल्ली में नहीं रही हूँ, तो मेरा पूरी प्रिपरेशन मैंने घर से की है। सो ये जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है इनका मुझे काफी हेल्प हुआ, तो आप वैसे कर सकते हो बट एटलीस्ट आपने अच्छी खासी आंसर राइटिंग कर चुके होने चाहिए बिफोर प्रिलिम्स। लाइक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू आर मेंस रेडी बिफोर योर प्रिलिम्स एंड मल्टीपल अटेम्प्ट का जो प्रेशर होता है दैट इज डेफिनेटली देयर। तो फर्स्ट इज कि बहुत बच्चे जैसे मैंने भी ऐसे ही किया था कि फर्स्ट अटेम्प्ट हम बस ऐसे ही देते हैं, देख के देखते हैं टाइप्स, सो डोंट डू दैट अनटिल एंड अनलेस यू आर मेंस रेडी, तो आप अटेम्प्ट दो मत वरना वो एक एक्स्ट्रा प्रेशर ऐड करता है। सेकेंड इज कि आप कोई हॉबी कल्टिवेट करो बिकॉज इट विल हेल्प यू टू डाइवर्ट योर माइंड फ्रॉम द प्रिपरेशन, थोड़ा रिजुविनेट होने में हेल्प करेगा वो एंड आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं योगा और मेडिटेशन करती थी, सो दैट हेल्प मी हैंडल दैट प्रेशर एंड ऑल्सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस एग्जाम को सिर्फ एग्जाम की तरह ही देखना, डोंट मेक दिस एग्जाम लार्जर देन योर लाइफ। You are already graduates, you'll be appearing for this exam, so this is just an exam, ऐसे ही देखो इसको and there are various other ways जिससे आप नेशन को सर्व कर सकते हो। आई डिड नॉट प्रिपेयर ड्यूरिंग माई कॉलेज बट बहुत बच्चे करते हैं, तो जैसे जैसे आपको टाइम मिलता है आप एटलीस्ट बेसिक बुक्स पढ़ के रख सकते हो, आप थोड़ा थोड़ा ऑप्शनल पढ़ सकते हो कॉलेज के साथ, बाकी आफ्टर कॉलेज यू कैन प्रिपेयर फुल टाइम। Those who are appearing for 2025 means give 15 days for every GS and cover every GS detail in detail. You must have already prepared your notes.
So revise that, attempt tests, give at least 4 FLTs for every GS, and keep writing ethics daily, at least two, three answers. Don't lose that hang of writing ethics. कि ethics कर लिया और छोड़ दिया. For Hindi medium, I am not aware of the resources because मैंने English medium में दिया है. So I'm sorry, I won't be able to answer that question. So I think all the questions are covered now. Yes, to maintain consistency, what is needed is you compete with yourself. तो मेरी एक डायरी होती थी जिसमें सुबह उठ के मैं रोज लिखूंगी कि आज मुझे ये चीजें पढ़नी है और रात को सोने से पहले मैं उसमें टिक लगाती थी जो जो मैंने कवर कर लिया है। तो रोज मैं अपनी प्रोडक्टिविटी या एफिशिएंसी लिखती थी वहां पर कि आज 80% हुआ है। तो अभी मेरे लिए खुद ही वो एक ये है कि नेक्स्ट डे मुझे एटलीस्ट 85% पे जाना है। तो वो मुझे मेरा सोर्स ऑफ मोटिवेशन रहता था कि कल मैंने 80% एफिशिएंसी अचीव की है, तो आज मुझे 85% अचीव करनी है। सो दिस इज व्हाट यू कैन आल्सो डू कि एक डायरी में डेली आपको लिखना है आप क्या-क्या पढ़ोगे एंड रात को सोने से पहले जो-जो कंप्लीट कर लिया उसमें टिक लगाते रहो। तो ये बहुत ही ट्रिवियल चीज़ लग रही होगी अभी, बट इन द लॉन्ग रन व्हेन यू फील दैट एंग्जायटी तो आपको वो देख के अच्छा लगेगा कि डेली मैंने पढ़ाई की है। एंड सेकंड एस्पेक्ट इज आप एक टाइमर परचेज कर सकते हैं, तो वो स्टॉप वॉच रहेगा। तो जैसे आप पढ़ रहे हो तो उसको शुरू कर देना है, तो बीच में पानी पियोगे या फ्रेंड से बात करने जाओगे या खाना खाने जाओगे तो उसको बंद करना है। तो इफेक्टिवली आपको समझ में आएगा कि हाउ मेनी आवर्स यू आर एक्चुअली स्टडिंग। सो दीज टू थिंग्स यू कैन डू। So I think we have covered the questions.